but I think both situation are same only. So why two different answers? इंटरव्यू से पहले बहुत कॉन्फिडेंस था, बट जब आपने मेरे को सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा तो मेरे को रियलाइज्ड हुआ कि मेरे को और काम करना चाहिए। यही चीजें आपको एक्चुअल इंटरव्यू में पता चलती तो फिर आई थिंक थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं ना। सर बिल्कुल सर बिफोर इंटरव्यू मेरे को लग रहा था कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर जाऊंगा, लेकिन अब मेरे को लग रहा है मेरे को बहुत 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 काम करना पड़ेगा इसमें। Okay, good evening Saurav, how are you? गुड इवनिंग सर, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू सर? I am also good, Saurav. Could you please tell me something about yourself? Yes sir. Good evening sir, my name is Saurav Naik. I am from Howrah, West Bengal. I have done my graduation from in BSc Computer Application from Sri Augustine College, University of Calcutta. So my hobbies are I am interested in taking landscape photographs, and I am also interested in listening to music. So my final year project including a real-time COVID-19 tracker with vaccination registration portal. Also, sir, I am a self-motivated and disciplined boy. That's all about me, sir. Okay, Saurabh, I need a little more detailing about your technical background basically. Yes, sir. Sir, I am procured in Java, and I also have knowledge in HTML. Okay, And my subject, I'm interested in DVMS and SQL. Also, sir, I know a little bit about C programming. okay, okay. Okay, great. Saurabh, one more thing I want to know. Are you the only child or you have some any siblings? I have a younger brother who is studying in class 10. Okay. Great. Saurabh, one more thing I want to ask Yes, you. sir. Just a second. Okay. I just want to ask you something about your real-time COVID-19 tracker project, like what it is all about, how it works. Is it working right now also, or you have stopped this project? So it's a basically a web application. So it is used to give a live COVID-19 statistics of India to aware the citizen of India. So it displays confirmed cases, active cases, recovered cases, and disease case rate of COVID-19 virus. So currently it's not working, but I deployed it in GitHub, and the purpose of this project Okay. is to aware the citizen of India, and I Okay. can share you the So link. one more thing I want to ask, like, what is the mechanism behind your project? Like, how basically it works, or what are the backend activities, which are taking place in your project, and what was your role in this particular project? So my role is a development of this project, and so we used HTML and CSS and other from front-end framework like Bootstrap and Tailwind CSS for our front-end. We use Java to fetch a API and display the data in our web page. So we also used MongoDB and Node.js for our database and server-side scripting language, as we have functionality which to book a real-time vaccination slot. The sole purpose of this is to demonstrate how to demonstrate how to book a slot, so that people get familiar to book a slot in real COVID app. So that's why we have to use a Okay. MongoDB and Node.js. So we use, Okay. as I said, we use JavaScript to fetch the data from an API and Okay. display them on a web page. Okay. In your career objective, you have mentioned that my goal also includes learning new technologies which will be introduced in upcoming years and contribute my best skill to the company. So Yes, sir. basically, I want to ask, like, the latest technology which we know right now is basically machine learning and artificial intelligence. It's in trend. Yes, So sir. as per your career objective, you are interested in learning new technologies. Yes, sir. So why haven't you mentioned machine learning in your resume? So I'm not aware of machine learning. I'm aware of machine learning, but I didn't know about machine learning. So as I am from a BSc background, so I don't have any knowledge on machine learning or AI. So, but I will Okay. surely learn in my my upcoming future. In future. Okay, so you'll join our company. We'll be teaching you machine learning, for example. Then also you'll learn no machine learning. Yes, So yes, sir, why sure, sir. haven't you learned it till now? There are many resources available. So I
tried learning, but due to my semester exams, and after that I am preparing full time for placement exams. Like Okay. that's why I didn't get a time to learn, but I surely learn in future. Okay, so you were basically preparing for your semester exam and your average CGPA is 7.6. Yes, sir. Could you please tell me any three subjects of your latest semester? So in my sixth semester, I had a software engineering, advanced Java, and I have uh, TOC, the theory of computation. Okay. So what is waterfall model, Saurabh? So as far as I recall, so I am unable to recall sadly, so I have to revise it. So it's been 1 year. Okay, okay. Okay, so in your technical skills, you have mentioned that you know C, HTML, basics of OOPS, C++, Java, and DBMS. So, what if I ask you some question? Would you be comfortable in this? Yes, I am comfortable with Java and TBMS. Okay, okay. So, you are not comfortable with C and HTML? So I know C and HTML, but I am most comfortable with Java and DBMS. But I know a Okay, little bit okay, about okay, C. okay, okay. So, what is method overriding in Java? So when we define a method in subclass, when you define a method in subclass with same name, same attribute, same return type as that of the method in superclass, the method in the subclass is said to override the method present in the superclass. And the method, when we call the method, it is the new definition of the method which is called, not the definition of the method present in the superclass. And this is called method Okay. overriding. So, what was the use of method overriding, and why was it not introduced in C language or the languages before Java, basically? So the use of method overriding is to perform different tasks in different ways. So I think Java is an object-oriented programming. It deals with it removes much more complexities that are present in C and C++. Yes. That's Okay. why so method overloading is not present in C programming. Overriding. Okay. Okay. Why Java doesn't use any type of pointers? So Java use any type pointer because due to security reasons. So in pointer can if Java use pointer, it memory address can be accessed directly. And due to security reasons, Java didn't use pointer. Okay. So basically, you are saying that with Java, the help of pointers, we can access any memory location, yes sir, and to prevent this, we use Java. yes sir. To make Are you a Java, 100% sure? sorry sir, Are you 100% sure of what you are saying? yes sir. I said the Java is more secure. To provide security, Java didn't use pointer, and that's Okay. Okay, so Java is a secured language. Can it prevent any type of hacking activities? so. Yes, sir. It's prevent hacking activity by using encapsulation. As encapsulation, Okay, yes, sir. okay. So you are talking about encapsulation. So I want to ask you the difference between data abstraction and data hiding. So data Are both abstract. the same thing or they are different? So data hiding, I think data hiding is different than data abstraction. Data abstraction and abstraction is a process where we Okay, hide all the uh, unnecessary details from the user and displaying the necessary details to the user so that user can apply more complex logic without thinking about all other complexities. Whereas data hiding is a process where we can hide the data hide the data of the class, like hide the methods and variables, so that the other classes outside the so other classes have doesn't use that variables or methods. okay. Sir, I want to ask you one more thing. How do you rate yourself in coding?
So I rate myself 5 out of 10 in coding. Why so less? So I have logic building capability, but sometimes it took me a long time. Sometimes I get involved in coding. Uh, to do a basic stuff, I take a lot of times. That's why I rate 5 out of 10 in coding. But I have Okay. a logic building ability. I can build any logic in using So what code. you are doing to improve this? So I'm trying to improve myself to uh, do lots of coding in a day, and I also try to improve using coding videos. Try to learn more about coding, how to do it in more efficient way, and how to do in more productive way, so that I can overcome this. And I also try to build my Okay. logic using by watching various YouTube videos and vlogs and Okay. websites. Suppose I put you in a project which is basically a coding based project and I give you 10 days time. So, could you work on your coding skills and be eligible for that project? Yes, sir, sure. I will surely work on that. I will first work on my basics. I will first go with the requirements of the project, and according to that requirement, I worked on that selected logic. I first build a logic, and then I will Okay. surely work and provides the Okay. project within a deadline. Okay. One more thing. You said that you are good at Java and database, right? Yes, sir, DBMS. Yeah, DBMS database, one and the same thing only. So, Yes, you sir. are good with Java and database. Can you please tell me how to connect, database in Java? So we can connect database in Java using features called JDBC. Okay. What is the full form of JDBC? So Java database connection is known as JDBC. So I'm getting little Okay. Okay. confused on how to connect, but we can connect Java with MySQL using JDBC. But I'm getting little confused Okay. on Okay. how So, to do you connect. know anything about JDBC statements? JDBC statements. Sorry, sir, I didn't recall it. Okay. So, what is the difference between delete and truncate command in Yes, sir. SQL? Yes, sir. So delete command is used to delete a row from a table, whereas truncate command is used to delete the entire structure of the table. Okay, 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 great. And what are basically the use of SQL queries? Like why they were introduced? So SQL queries are used to so SQL queries are used in fetching and retrieving or really fetching and retrieval data, organized data, so that user can get to know and user can retrieve more in a more efficient way. So queries are written in SQL to Okay, okay. As you said just now, you said like you are good at a logic part. You are not able to code, but you are able to develop logic. Am I right? yes, sir. Okay. So, Saurabh, I just want to give you a small, program. We have to find I'll be giving you a time, 4:05 is the time, right? 4 hours, 5 minutes. Okay. I'll be giving you a time. You Yes, sir. have to find the angle between the minute hand and the hour end of the clock at that particular time. So the user will input a time. You have to find the angle between the hour and the minute hand. So, what logic could be used in this? So I have to find the angle between the minute hand and the hour hand. So can you repeat the Yeah. time? Anytime, yeah. See, user can input anytime, no? So Yes, you sir. have to take input as a time from user. Suppose user enters 9 hours 5 minutes as the time, 9:05. Okay. So you have to find the angle between the hour and the minute hand. Yes, sir. So first of all, we get the data from the user, get the Okay. get that number from the user, and we subtract that number with 1160, and then the data we get uh, is the angle between the hour hand and the minute hand.
Okay. You have also mentioned one more project, student management system. So could Yes, you sir. please explain that in detail? So student management And what system was is your role in that project? How many people made that project? so it's a solo project. It is made by me. So it is a project where Okay. it is a project where data of the students are recorded in a organized way, like roll number, name, their passport size photos, their education qualifications, and there is a function called generate ID card, where when a user clicked on generate ID card, the Okay. ID card of that student get printed in a PDF format, and Okay. and in that ID card we also attach the passport size photos along with all the datas, and we can delete, add, Okay. or modify any type of records in a student table. You can also Okay. So change what was the your role in this particular project? sir. It was a solo project. It is completely made by me. I was in Okay. development Okay. project. Okay. 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 One more thing I want to ask, Saurabh, that your 12th percentage is only 57. Yes, So sir. why so less percentage in 12th? So, honestly speaking, in my 11th, I got distracted by some of my friends, uh, due to Okay. which I didn't able to concentrate on my class 11th and 12th. That's the main reason why the score is below 60. And Okay. So in your also, 10th, you were distracted by your girlfriend, maybe because your 10th percentage is also 64. sir, no, sir, in my 10th, it's what I was not distracted by anyone, but in my 10th, I worked less. I worked hard. I worked not as much as I can. But in my 12th, Okay. I will able to get above 60, but due to some distraction, I was not able to get marks. Okay. So I can see that your passing year is 2018 of 12th, right? Yes, And sir. graduation 2021. It means you have not taken any gap after 12th, right? No, Am sir. I right? No. Yes, sir. You are right. So why haven't you given the improvement exam of 12th? So I think, sir, education gap is uh, it impact hugely on my career, because most of the companies are not accepting an education gap or consider an education gap in a negative Okay. way. That's why I didn't. That's But why I am also. many companies do not accept below 60% also. Yes, sir. That's also true. But I also suggested by my parents to not to sit for a year, Okay. because if you not study for a Okay. year, your interest will lose in study. That's why I decided to go Okay. with my BSc. That's it. Sort where do you see yourself 15 years from now? Uh, so I want to see myself in a more professional, more efficient, and more skilled. So I want to see myself in a more efficient, and more skilled. So I want to devote my next 5 year, in a way to learn new things, learn new technologies, and to see myself in a more professional way. Okay. Also, So do you want to see yourself after 15 years in the same company or some different company? so if my interest and company interest matched for 15 year, I will see myself in the same company, until my work is beneficial for the organization, for your company. I will continue my work for 15 or for my entire life also. Okay. So is this your first interview, Saurav? So yes, sir, this is my first interview. I Okay. didn't appear for any Saurav, I company. just want to ask you, like, you are a BSc graduate in computer application. Yes, sir. Why you are not preferring higher degrees? So I think so. Earning as I have below 60% in my 12th, and most of the companies, if I go for higher education like uh, MCA or such as MTech, not MTech, MSc.
So many companies didn't hire us below 60%. Okay. But as per my knowledge, Okay. most of the BSc students get placed in below 60%. That's one of my reason. Okay. And my second reason is Okay. my family is not financially uh, strong. That's why I didn't go for any higher education. Okay. Sarav, if any company, like today only, if any company offers you a higher package than our company, so what would you do in this particular situation? uh, if company offers me higher package than your, so I will prefer to work on your company because knowledge is what matter for me. Knowledge and skill is what matter for me rather than package. uh, that's Okay. why. So would you work for free with our company? So not free, so but I will definitely build my skills and knowledge, but See, at the same time. I am giving you some X amount. No, no, no. Let me Yes, be very clear with you. I am giving you X amount because I am yes sir. thinking that Saurabh has that capability that I can give him X amount. But any Yes sir. company is giving you higher amount greater than X. Let us suppose if some company is giving you Y amount, which is very greater than X, and that company Yes sir. might be seeing your capabilities. Now, what I am not able to see, that company might be able to see. And depending on your capability only, the company is giving you a package. Yes sir. Money is not raining that okay, it's raining, give some droplets to Saurabh and let go. Yes sir. So what is the point in sticking to our company? I just want to ask this thing. So your company has much more opportunity and challenges than any other company, and so I think the organization is matter most rather Okay, than see, money. we So we if are all covered with challenges since our childhood. So now you might be looking to settle down. So why you want challenges? Instead of you should be looking to settle down, na? without challenges we can't grow. So challenges will makes us to grow, makes us to achieve success, and that's why I think so Okay, challenge okay, and is equally important for anyone who wants to grow and get success. okay. One very basic question: what do you do in your free time, sort of? So I watch travel vlogs in my free time. Also, Okay, so I watch news channel in my free time. okay. So which all places have you traveled personally, or you desire to travel? So I desire to travel in Leh Ladakh. So Okay, I traveled Gantok, Sikkim, and okay, also Darjeeling and okay, Puri. Those are the places I okay, traveled, and my desired place is northeast, like Arunachal Pradesh and Leh Ladakh. That's okay. are my desired places. Okay. One situational question I want to give you. Suppose you are the chairman of a IPL team. Are you interested in cricket little bit? So I watched cricket little bit, but I didn't much interested in cricket. I Okay. So which didn't know sports you much are about cricket. interested in? Which sports you are interested in? So I interested in hockey. Hockey. Okay. Suppose you are the chairman of a hockey team. You are forming a hockey team, and I'm not very sure how many players are there in a hockey team. Can you please tell me? So I think it's 9 players in a hockey team. Okay. Okay. Suppose there are 9 players, and you have already selected 8 players. There is vacancy only for one player. Now you have 2 players with you. Player A, who is currently in form, who is new, enthusiastic, and in form, right? And you have player B, who has experience of about 20 years of playing hockey, but currently he is not in form, right? He is out Yes, of sir. form, but he has a lot of experience, right? Because he's playing since 20 years. Now you have just one vacancy. Either you can fill it with person A, the one with enthusiasm, the one newly joined, the one who is in form, or person B, the one who is out of form but experienced one. Whom would you choose and why? So I choose the person who is in form because I think experience is important, but in sports, enthusiasm
And enthusiasm is also equally important rather than experience. Uh, Okay. I choose one with enthusiastic one. I choose the enthusiastic one. Okay. He is more Suppose enthusiastic and passionate. just I'm relating it. Suppose in my company I make you manager of a particular team. Right. Yes, sir. Now you have to select one candidate. You have a vacancy for one candidate. Now again you have two choices. One, the newly joined who is full of enthusiasm to work, right? Who is a pro coder, and the second one who has a lot of experience, who has been working in our company since last 30 years, but Yes, not very good in coding or a little less in enthusiasm. But yes, his experience will definitely help you in your team whenever you go with certain difficulties, or whenever you are not able to convince your client. His experience will help you. So whom will you prefer yes. and why? So in that situation, I will prefer an experienced one Okay. because there are lots of team players who can cope that enthusiastic way. But Okay. if a situation arrived when we are trapped in a logic, then the enthusiastic team player will helps in that situation. So but I think both situation are same only, so why two different answers? So in sports, I think enthusiasm is more important. But in the field of like coding and doing submitting a work within a deadline, so I think Okay. experience is more important than Okay. enthusiasm. Okay. Okay. Okay, great, Saurabh. It was lovely talking to you. Your interview So result will be communicated shortly via email. Okay. yes, sir. ओके सौरभ। सो पहले मैं आपको फीडबैक कॉल देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक सौरभ बिफोर दिस मॉक इंटरव्यू, सौरभ आफ्टर दिस मॉक इंटरव्यू, मतलब वर्थ इट लगा कि ऐसा था कि यार वही है, मतलब ठीक है। नहीं सर, बिल्कुल वर्थ इट लगा। सर मैं इंटरव्यू से पहले बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं कोप कर लूँगा, बट जब आपने मेरे को सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा, तब मेरे को रियलाइज़्ड हुआ कि मेरे को और काम हम्म, करना चाहिए और काम करना पड़ेगा इन दैट सिचुएशन। सर हम्म, मैं थोड़ा फंबल हो रहा था बिकॉज़ मैंने हम्म, प्रैक्टिस किया था स्क्रीन कंप्यूटर के सामने बैठ के, हम्म, बट स्टिल मैं थोड़ा फंबल हो रहा था। हम्म, तो इसलिए सर मेरे अभी को आप तो मुझसे थोड़ा सा फेमिलियर हो तो फिर भी कम है, इवन रियल इंटरव्यू में तो ये डबल होने वाला है यस ना? सर। तो उस हाँ पर सर। वर्क करना चाहिए। हाँ, आप यस कंटिन्यू करिए। और सर मेरे को बिल्कुल ये वर्थ इट लगा। हम्म, और फर्स्ट मेरे को ओके। ये मालूम चला कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। अ, और यही सब लगा सर मेरे को। ओके। थोड़ा सा एक लाइन में सौरभ, बिफोर इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू क्या डिफरेंस है अंदर, थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो रहा है या अच्छा फील हो रहा है कि यार चलो ठीक है, एटलीस्ट हमको हमारे बारे में पता चला थोड़ा सा, और अभी समय है, हम वर्क कर सकते हैं, मतलब यस यही सर। चीजें आपको एक्चुअल इंटरव्यू में पता चलती तो फिर आई थिंक थोड़ा सा हम लेट हो जाते, यस सर। है ना? सर बिल्कुल सर। सर बिफोर इंटरव्यू मेरे को लग रहा था कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर जाऊँगा, लेकिन अब मेरे को लग रहा है मेरे को बहुत, बहुत, बहुत काम करना पड़ेगा इसमें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। और ग्रेट, कैमरे के ग्रेट। सामने जब तो एक्चुअल इंटरव्यूअर आते हैं तब बैठ के तब मतलब सिचुएशन ही चेंज हो जाता है, तो उस पे बहुत वर्क करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो तो यही। बेसिकली यार हम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, जो हमको लगता है ना यार कि यस आइदर हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये हो ही जाएगा। तो एक बार हम मॉक इंटरव्यू कर लेते हैं तो हमको रियलिटी पता चल जाती है कि यार यस हमको किस लेवल पर वर्क करना है। ठीक है, सर। सबसे यस पहले सर। हम आपके यार रेज्यूमे से शुरू करते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर रेज्यूमे, टू बी ऑनेस्ट। बस थैंक यू इसमें सर। एक दो चीजें हमको करेक्ट करनी है। देखो सबसे ऊपर, मतलब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेंशन नहीं लेना, तो आप तो बस हम्म, सुनते जाओ, नोट कुछ भी नहीं करना। सबसे हम्म, ऊपर इसमें ना सौरभ नायक जो लिखा हुआ है, जस्ट हम्म, सेकंड में आपको दिखाऊं, तो आप हम्म। इसका अलाइनमेंट देखो, एड्रेस के जस्ट ऊपर होना चाहिए ये। आप देखो यस थोड़ा सा शिफ्टेड थोड़ा दिख रहा है सा। अलाइनमेंट। यस यस सर, थोड़ा सा राइट हैंड शिफ्टेड है ये हाँ, हाँ, थोड़ा तो सा। ये सब चीजें देखो क्या होता है ना, ये रिज्यूमे में दो चीजें होती हैं। एक तो सर। आप क्या लिख रहे हो वो, दूसरा यस आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो।
दोनों Yes. चीजों का इक्वल वेटेज होता है। ठीक है। Yes. अब यहाँ पर अपन ने चलो एड्रेस लिख दिया, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच स्ट्रीम, सब कुछ लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। फोटो के साथ साथ अपने कॉलेज का फोटो भी लगाना है, जिससे कि ये रिज्यूम में थोड़ा सा ऑफिशियल टच आए। Okay, sir. क्लियर है। Yes, sir. अब एक चीज और, हमेशा रिज्यूमे को प्रेजेंट टू पास्ट में अरेंज करना है। तो जो एकेडमिक डिटेल में आपने सबसे ऊपर 10th लिखा है, फिर 12th लिखा है, फिर ग्रेजुएशन लिखा है, यार एज ए Yes. इंटरव्यू मेरे को आपकी रिसेंट प्रोग्रेस से ज्यादा मतलब है। तो हमको अल्टीमेटली अपने को सिलेक्ट कौन करने वाला है? इंटरव्यूअर भाई। ग्रीन और Yes. रेड का बटन उसके हाथ में है, तो जी मेनली सर। हमको उसको इम्प्रेस करना है। ठीक है। तो Yes. अब अपन को क्या करना है? उसके लिए एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ करना है। तो Yes. जो लेटेस्ट चीजें हैं, ग्रेजुएशन पहले लिखो, फिर 12th लिखो, फिर 10th लिखो, और Yes. आपका बेसिक डिटेलिंग आपने लिख दी भाई। ठीक है। उसके Yes, बाद sir. आपने अपने एकेडमिक डिटेल्स लिखे, फिर करियर ऑब्जेक्टिव लिखे। अच्छा, आप मेरी बात समझो, मैंने आपका रेज्यूमे देखा। ठीक है। मुझे सौरभ को मेरी कंपनी में प्लेस्ड कराना है, तो मैंने जी। देख लिया यार सौरभ का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच स्ट्रीम, इन सबसे मुझे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अब मैं हम्म, सौरभ का पहले करियर ऑब्जेक्टिव देखूंगा कि भाई सौरभ का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके हिसाब से मैं उसकी एकेडमिक डिटेल देखूंगा ना कि यार उसके 10th 12th ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। तो Yes, sir. हमेशा अपनी बेसिक डिटेल्स लिखो सबसे ऊपर, उसके बाद सबसे ऊपर जो एक्चुअल रेज्यूमे जहां से शुरू होता है, वहां सबसे ऊपर करियर ऑब्जेक्टिव लिखना। जी ठीक सर, है। बिल्कुल सर। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स बहुत बढ़िया लिखी है भाई। और यहाँ पर ना बेसिक्स वाला काम नहीं चलता यार, आइदर लिखो या मत लिखो कोई भी चीज। तो आपने इसमें बेसिक्स ऑफ ऊप्स लिखे, मत या तो ऊप्स लिखो सिंपल, है जी ना, सर, क्योंकि यार ओके सर। बेसिक वाला यहाँ पे काम नहीं चलता। कोई चीज आती है तो फिर बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 10 की जगह 5 चीजें लिखो, लेकिन वो लिखो इन विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट। ठीक है। प्रोजेक्ट आपने बढ़िया लिखा है। प्रोजेक्ट में बस थोड़ा सा आपने ये तो लिख दिया कि आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज की और प्रोजेक्ट का नाम क्या है। जस्ट एक लाइन में प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग, है ना। आप जी सर। आई थिंक आप मेरा प्लेसमेंट होगा प्राइम मेंबर हो, राइट सौरभ? तो यस, यस सर। आपको वहां पर रेज्यूमे ट्रेनिंग में मेरा पर्सनल रेज्यूम मिलेगा, तो एक बार आप उसको जी चेक सर। करना मैंने प्रोजेक्ट कैसे लिखा है। आपने प्रोजेक्ट का जी। नाम लिखा, आपने ये लिखा कि क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा ब्रीफ, फिर आपने क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज किया वो लिखा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज यूज की टूल्स में आपने भाई, इक्लिप्स आईडी यूज किया या अपाचे टॉमकैट यूज किया, वॉट एवर टूल्स यू हैव यूज्ड वो लिखना है। और फिर टीम साइज एंड योर रोल इन द प्रोजेक्ट। ठीक ओके है। सर। ताकि इंटरव्यूअर, अब देखो मैं आपका रेज्यूमे स्टडी कर रहा था पिछले 2 दिन से। अब मैं यस यार सर। सोच रहा था कि भाई सौरभ से पूछूं तो क्या पूछूं प्रोजेक्ट के बारे में। अब मुझे जी ये सर। दिखा कि नोट जेएस, मोंगोडीबी, जावा स्क्रिप्ट है। अब अगर मैंने इन तीनों से आपसे सवाल पूछ लिए होते तो आप दिक्कत में आ जाते, जी सर। जी क्योंकि सर, बिल्कुल आपने सर। अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ टेक्नोलॉजीज लिखी और टेक्नोलॉजी पर तो भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। जी वहीं सर। आप क्या कर सकते थे, इंटरव्यूअर को थोड़ा सा डिविएट कर सकते थे। आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख दिया, आपने टूल्स जो यूज किए हैं वो लिख दिया। हो सकता है टूल्स के बारे में पूछ ले आपसे कि भाई ये सर्वर क्यों यूज किया, ऐसा वैसा, जी है सर। ना। फिर टेक्नोलॉजी है, टीम साइज हो सकता है उसके बारे में पूछ ले कि आपने अकेले क्यों बनाया एंड ऑल दैट। तो हम इंटरव्यूअर को एक स्कोप दे रहे हैं और अपने आप को बचा भी रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है। तो जी। ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर थोड़ा सा भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक दो तो लिख दो, शगुन के लिए लिख दो कि भाई आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं, वो सब लिख दो। और रेज्यूमे जो है वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट डिक्लेरेशन। तो नीचे आपको अपना नाम लिखना होगा और सिग्नेचर करने होंगे, वो डिक्लेरेशन होता है कि यार यस दिस इज द परफेक्ट रिज्यूम, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आर करेक्ट। ठीक है। तो वो आप मेरा रेज्यूमे देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब जी सर। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू वॉज वेरी गुड। थोड़ा सा मुझे बस लग रहा था कि टेक्निकल स्किल्स पर हमको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। वो भी इसलिए यार क्योंकि आपने यार एक जो चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि आपने सी और एच टी एम एल लिखा और फिर एंड मोमेंट पे डिनाई कर दिया कि मुझे इतना अच्छे से नहीं आता। तो इससे क्या जी सर। प्रूफ हुआ? आप भले ऑनेस्ट पर्सन हो, लेकिन इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर आपका रिश्तेदार नहीं है, चाचा फूफा नहीं है जो आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचे। वो आपको जी। सैलरी देने वाले हैं, तो रियलिटी जज करेंगे वो। तो अब सौरभ के लिए क्या इमेज आई उनके मन में? यार ये झूठा आदमी है, कंपनी में भी 10 बार मैनेजर से झूठ बोलेगा, गर्लफ्रेंड के पास जाएगा, बीमार होने की छुट्टी ले लेगा। जी समझ रहे सर। हो? तो ये सब चीजें अपन को ध्यान रखना है। मत लिखो ना, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल मत लिखो सी और एस टी एम एल। अच्छा, मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूँ। एक सिचुएशन है रेज्यूम में मैंने 2 सब्जेक्ट लिखे, लेकिन 2 सब्जेक्ट से भाई कुछ भी पूछ ले मैंने आंसर दे दिया इंटरव्यूअर को। दूसरा जी। सिचुएशन, रेज्यूम मैंने 10 सब्जेक्ट लिखे हैं, बता कुछ भी नहीं पाया।
कौन सी सिचुएशन बेटर है आप बताओ? सर फर्स्ट वाली सिचुएशन बेटर है, बिकॉज फर्स्ट मैंने वाली सारे ना। अगर बेटा yes, sir. रेज्यूमे से सिलेक्शन हो रहा होता तो फिर इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट ही क्यों होता? आप खुद सोचो ना। इतना जी सर पैसा जी खर्चा करके फ्लाइट लेकर के आते हैं, है ना, उसके जी बाद सर इंटरव्यू लेते हैं, क्यों क्यों लेते हैं भाई? आपके जी रेज्यूम सर को वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो लिखा है वो 100% सच सर है कि नहीं है, फेक ही बिल्कुल तो सर नहीं है सर बातें। ठीक यस है। सर चलो, बाकी और थोड़ा सा मुझे ये लगा कि यार कॉन्फिडेंस नहीं था आपका कम, बट थोड़ा सा लैक ऑफ एंथुजियाज्म लगा। एक ठीक है, मैं यस सर आपका मान सकता हूँ कि आपने यार फॉर्मल बनाने के लिए मे बी ऐसा किया हो कि यार थोड़ा सा जी फॉर्मल दिखूंगा मैं एंड ऑल, बट यार फॉर्मल होते हुए भी हम एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, है ना? तो जी थोड़ा सर सा वो एंथुजियाज्म दिखना चाहिए, थोड़ा सा वो आंखों में इंटरेस्ट झलकना चाहिए कंपनी के लिए, जॉब के लिए, है ना? जी सर जी सर ठीक है। बाकी सब तो यार एकदम सॉलिड था, कोई टेंशन नहीं थी भाई, बढ़िया, अच्छा है। ठीक है। और थोड़ा सा देखो यार, कुछ कुछ चीजें हैं जैसे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के बारे में आपसे पूछने ही पूछने वाले हैं, आपके 12th के जी सर परसेंटेज का में ये पूछने वाले हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछने वाले हैं। ठीक है। जी सर तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ना रट लो, अपने एक पेन और कॉपी में लिखो, प्रिपेयर करो, रट लो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल, स्ट्रेंथ वीकनेस पूछने ही वाले हैं, है जी ना? सर तो आपके पास तो बिल्कुल मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर, इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है, उसको देख जी डालो। सर उसमें मैंने बहुत सारे सैंपल आंसर्स दिए हैं, मैंने क्या पर्सनली आंसर किया था वो भी दिया है ना, मेरे बच्चे जी क्या सर क्या आंसर करते हैं और क्या क्या गड़बड़ करते हैं वो भी दिया हुआ हाँ सर है ना? चलो, और हम्म, उसके अलावा देखो यार, पूरी दुनिया पैसों के लिए जी रही है। आज मुझे भी कोई कंपनी हायर पैकेज देगी, मैं छोड़ दूंगा, मतलब जी इंटरव्यूअर खुद कंपनी छोड़ देगा। तो अगर आपको सेम कंपनी में मतलब हायर पैकेज दूसरी कंपनी दे रही है, सेम लर्निंग है, बी ऑनेस्ट ना यार। कुछ उससे ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, बी ऑनेस्ट विद इट कि हाँ सर, ऑब्वियसली अगर ज्यादा पैकेज मिलेगा तो इसका मतलब मेरी यस कैपेबिलिटी उस लाइक है, तभी मुझे एक पैकेज दे रहा है। उसको इसी तरीके से बोलना है, sir, my जी capabilities might be good, that is why the company is offering more package, so why जी would I सर not switch? Definitely I would have switched. But if your company offers me the same package, since your company is a great one, it has a great learning, I would definitely have chosen your company. And since I am जी attending this interview and not interview of some other company, it itself is evidence that I am highly interested in your company. भाई अब आप बताओ, बिल्कुल खुश नहीं हो गए आप मेरा आंसर सुन के? बिल्कुल खुश है हुआ ना? सर यस सर तो मैंने सांप को भी मार दिया और मेरी लाठी भी नहीं टूटी, अगर आपने ऑब्जर्व किया। मैंने ये बिल्कुल सच भी बता दिया कि मैं कंपनी को स्विच करूंगा, लेकिन हम्म आखिरी में आते आते भाई इनकी तारीफों के पुल बांध दिए। स्टैक प्रोसेस आप समझते हो डेटा स्ट्रक्चर में, जो आखिरी यस में यस बोली गई बात है वो दिमाग में सबसे ज्यादा बैठती है। तो वो यस पहली सर की बात भूल चुका होगा, आपने तारीफ की वही, उसकी बात वो उसको याद रही होगी। यस समझ रहे कंपनी हो? की तारीफ यस ठीक है। विद प्रैक्टिस आएगा, और थोड़े से आंसर्स रटो, प्रैक्टिस करो उनको। ठीक है। चलो, वेरी सर गुड, मेरा एक बहुत बढ़िया, क्वेश्चन था बहुत शानदार। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो। सर मेरा विप्रो का इंटरव्यू है 30th of June। सो मेरे एक पास बार कुछ थोड़ा दिन सा है लाइक आपका, एक बार आपका वॉइस कट हो सर गया, दोबारा बोलो। सर मेरा विप्रो का इंटरव्यू है 30th of June। सो मेरे पास ठीक है। कुछ ही दिन है, तो मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ? मेरे पास विप्रो विल्प का इंटरव्यू है, मैंने विप्रो विल्प का असेसमेंट क्लियर कर दिया है। ठीक है। तो विल्प के बहुत इंटरव्यू के बढ़िया, लिए कुछ बहुत बढ़िया। सजेशन। हाँ देखो, मैं आपको बोलता हूँ, दो चीजें होती है इंटरव्यू में, तीन चीजें होती हैं। लाइक 33% वेटेज आपके रेज्यूमे को मिलता है, 33% वेटेज आपकी टेक्निकल नॉलेज को मिलता है, और 33% वेटेज आपकी रिप्रेजेंटेशन को मिलता है। ठीक है, आप जी कैसे सर बोल रहे हो, कैसे चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो। अब हम देखते हैं इन तीनों 33% को गेन करने के लिए हमको कितने दिन का एफर्ट लगेगा। रेज्यूम बनाने में हार्डली 1 से 2 दिन लगेगा अगर हम इसको इम्प्रूव करें, और अपनी स्किल्स पर वर्क करने में भी हार्डली 2 से 3 दिन लगेगा। जो बेसिक क्वेश्चन है उनके आंसर रटो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अब जो जी सर तीसरा जी सर एस्पेक्ट है बीच वाला, टेक्निकल, भाई उसको तो आप जी सर कितना भी कर लो, कभी भी आप, यू कैन नॉट बी 100% श्योर ना। तो मेरा जी सर रिकमेंडेशन है कि रेज्यूम में 10 चीजें मत लिखो यार, दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लिख लो डीबीएमएस, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लो, बट जस्टिफाई करो। अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि यार इतना कम क्यों लिखा, तो बोलो सर मुझे बाकी चीजें बेसिक लेवल पर आती हैं,
तो मैंने जो भी चीजें मेंशन की उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, जी सर। इसलिए मैंने कम चीजें मेंशन की है भाई। परफेक्टली एक्सेप्टेबल आंसर है, ठीक है। जी सर। ठीक है सर। ओके, और कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, और मैं अभी आई थिंक विद इन 1 आवर के अंदर अंदर आपको रिकॉर्डिंग मेल करा दूंगा इसकी, ठीक है। ओके सर। चलो, ठीक है सर। थैंक यू ओके सर। डियर। हाँ मैम, मैम से आप कांटेक्ट करना, आई थिंक एक फॉर्मेलिटी होती है, उसके लिए आपकी फ्रंट फेसिंग फोटो चाहिए होगी, ठीक है, तो वो दे जी सर। देना उनको। ओके और सर। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, थैंक ऑडियो यू सर। वीडियो बैकग्राउंड सब एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसमें ठीक एक है चीज सर। और है कि आपको मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में, ऊपर ऐड रिव्यू का ऑप्शन आएगा, तो आपने अगर जी अभी सर। तक रिव्यू दिया है क्या कोर्स में? नहीं सर, अभी तक नहीं दिया। सर मैं सोच तो रहा था कि हाँ, तो आप ना ऊपर मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैं सोच रहा था कि वंस आई गेट प्लेस्ड इन अ कंपनी देन आई विल राइट दैट रिव्यू दैट आई एम प्लेस्ड इन विप्रो तब और हम फिर से टीसीएस। मौका दे देंगे आपको। अभी ना आप फिलहाल ना मॉक इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका इंटरव्यू दे दो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, मैं आपको बताऊं, बच्चों ने हम्म। पैसे भर रखे हैं, बच्चों ने कोर्स ले रखा है, फिर भी काफी हम्म। सारे बच्चे मॉक इंटरव्यू नहीं करा रहे हैं। तो जब आपका जी वो बिल्कुल फीडबैक सर। देखेंगे तो वो इंस्पायर्ड होंगे कि यार मतलब फायदा बहुत मिल रहा है इससे, ठीक है। जी सर। बिल्कुल सर, चलो, ओके, बहुत फ़ायदा बाय मिला। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजिन सर। जा करके अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।